So today, first of all, we will do the definition of Lebesgue measure. Lebesgue measure. Lebes. What is Lebesgue measure? So before coming to the outer measure जो है, what was outer measure? Outer measure was, it was a function defined on the set function. It defines on the power set of R to the non-negative extended real numbers. So इसमें जो भी ये points आ रहे हैं ये sets को denote कर रहे हैं. So if I have the set A in the power set of R, then what is the outer measure? How it will be written? This is M star A. So this is the definition of outer measure. Right? Now, if we will restrict the domain, right? If we will restrict the domain, अगर हम domain को क्या कर देंगे? Restrict कर देंगे. Outer measure की domain को अगर हम restrict कर देंगे, यानी इसमें सिर्फ वो sets आएंगे जो measurable sets हैं, right? यहाँ आप लिखेंगे class of measurable sets from PR. PR में से जो क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स है, राइट, जाएगा वही 0 to infinity, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स ही रहेगा. सो PR मींस व्हाटएवर द टोटल द सेट वी हैव आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसका जितने भी पावर सेट में जो सेट्स आते हैं दैट इज रिटन इन द डोमेन ऑफ P of R. सो लेकिन यहाँ पे हमने डोमेन को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया. दिस इज द वी आर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ Lebesgue measure एंड दिस इज द outer measure, right? So then how it is defined? It is the function is defined as M. So here M of A will be written as M star A. So what is the meaning of this? I'm elaborating it more. So what is the, I'm writing again, what is the Lebesgue measure? So when we restrict the domain of the outer measure from the power set of R to the set of measurable sets, right? Then the measure is called the Lebesgue measures. So you will write a definition, the restriction. The restriction of set function of the set function outer measure, because outer measure is called the set function, to the class of measurable sets is called Lebesgue measure. Is called Lebesgue measure. Right? And it is denoted by, M, small m, right? So if E is measurable, set, then we define measure M of E to be the outer measure. To be the outer measure of E, right? And that is M of E is equal, Lebesgue measure of E is equal to outer measure of. So what is the meaning of this expression? क्या है इस Lebesgue measure क्या है? So I'm writing the, अब देखो पूरी जो आपके पास ये डोमेन थी, मैं यहाँ पे पहले M star को डिफाइन कर रही हूँ. डोमेन थी पूरी P of R to the set of
नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें सारे पावर सेट ऑफ आर्ट यानी एक सेट फंक्शन है, इसमें एलिमेंट्स क्या पड़े हैं, सेट्स पड़े। अब हमने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी ये जितने सेट्स पी ऑफ आर के अंदर पड़े हुए, सपोज करो ए, यहाँ से ए से लेके सोन अप टू A1 A2 A3, देयर आर सो मेनी सेट्स, क्योंकि आर एक इनफाइनाइट आपके पास सेट है, तो पावर सेट ऑफ आर भी आपके पास नॉन एंडिंग ही जाएगा। तो इसमें जितने सेट्स हैं उसमें से सिर्फ वो हमने कलेक्शन ली, ये देखो मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसमें सिर्फ कौन से पावर सेट के सेट्स पड़े हैं, जो क्या है, मेजरेबल सेट्स, राइट। अब सपोज करो यहाँ पे एक सेट ए है, ए सेट आ कहां से रहा है, अल्टीमेटली ए इज कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ आर। अगर मैं आउटर मेजर देखूंगी तो वो एम स्टार ए ही आएगा, यानी जितने भी पावर सेट, अगर यहाँ पे भी कोई सेट मान लो ए एन पड़ा है तो एम स्टार ए एन ही आएगा, राइट। लेकिन अब हमने डोमेन को कर दिया है रिस्ट्रिक्ट। जब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फंक्शन का नाम एम स्टार नहीं है, क्या है, एम है, पर ये एक क्या वैल्यू दे रहा है, एम स्टार ए, मतलब एक फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी बेटा, एक इनपुट की एक ही आपके पास आउटपुट आएगी, दो आउटपुट नहीं आ सकती। तो अगर मैं ए को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ लिखती हूँ तो ये क्या आया, एम ऑफ ए, तो होगा क्या, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन we define the Lebesgue measure m of p to be the outer measure, क्योंकि रेंज में जाके वैल्यू जो है वो दोनों की सेम होगी। आउटर मेजर ऑफ ई, दैट इज m of e, नथिंग इज m स्टार e, क्योंकि पहले आउटर मेजर है, ये डोमेन बड़ी है, बड़ी डोमेन पे हर एक सेट की वैल्यू m स्टार में आ रही है, सिर्फ जहां पे कलेक्शन मेजरेबल सेट्स की मिल जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज है, जो रेंज में जो वैल्यू है उसका नाम मेजर ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन ए अगर डोमेन है तो उसकी रेंज में यूनिक एलिमेंट ही होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई एम स्टार, that's why measure of A will be equal to M star. So this is the concept of Lebesgue measure. Outer measure is defined on the set function power set of R, and Lebesgue measure is defined, it is a restriction to the outer measure, it is defined on the measurable sets. Now we will have the theorem that we have done yesterday. The theorem was, if m star, we have done m star is equal to 0, then E is measurable. Now we will do some corollaries. Corollary 1. Every countable set is measurable and its measure is 0. And its measure is 0, right? Proof. Let E be a countable set. We have already proved that every countable set has an outer measure is equal to 0. And the above theorem says that if a set has a measure 0, then it is measured. It implies E is measured. Right? अब यहाँ पे outer measure नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, measure. Measure means Lebesgue measure. So it implies we have to find the measure. So measure of E, by the previous definition, this is m star E, which is equal to 0. So we have proved that E is measurable, measurable set, and the Lebesgue measure of E is equal to 0. So this is the first corollary. Now we'll come to the corollary number 2. The Cantor set C. The Cantor set C and all its subsets are measurable, and each of them
has the measure 0. And each of them has the measure 0, right? We have already proved that m star c is equal to 0, right? It implies every set whose measure is 0 by the theorem, then c is measurable. बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन काउंटेबिलिटी मेजरेबिलिटी, क्योंकि ये सेट मेजरेबल है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, दिस सेट इज अनकाउंटेबल, राइट? अब हमने प्रूव क्या करना है, एंड all its subsets are measurable. ले लिया, let's suppose E be any subset of C. Let E be any subset of C. Now E is contained in C. It implies m star E is less than or equal to m star C. ठीक है जी? And C is equal to 0. It implies m star E is less than 0, but the measure is always positive. But the measure is always positive. It implies what? M star E is equal to 0, right? And again, the theorem states if a set has a measure 0, then it is measurable. It implies E is measurable, right? So we have proved that all its subsets are measurable as E was a subset of C. So therefore, it is measurable. Now we have to prove that has a measure 0. And then hence it implies this is equal to Lebesgue measure of E is equal to outer measure of E, and which is already equal to 0. It implies M of E is equal to 0. So therefore the Lebesgue measure is 0. So that's all about the corollaries of this theorem.